Good morning, dear students. We continue with the combustion. As the self-ignition temperature reach inside of the compression stroke in the compression ignition engine, the indication of the combustion start, and the combustion in the compression ignition engine, it's a start with the pattern of the spontaneous combustion. The spontaneous combustion, because of that, as the injected fuel particles comes in a contact with the vaporous fuel particle and hot air, they start reacting with that and the flame initiation and development. So during this time, around 70 to 95% of the fuel in the combustion chamber, which is available in the vapor state, start burning at different location of the combustion chamber. So this gives a very quick rise in temperature and pressure within the cylinder. The higher temperature and pressure reduce the vaporization time and ignition delay time for additional fuel particles and cause more self-ignition points to further increase the combustion process. As you know, once an injector inject the fuel inside of the combustion chamber, at the tip of the nozzle, or we can say that the multiple hole injector, which is also known as a pintles, the rich fuel available, and as the far away from the injector, the lean fuel particles is available. So as soon as the lean particles of the fuel particles get reacted with the hot air particles, they ignite first, and it may be possible in a different location of the combustion chamber, and because of this the spontaneous combustion is start, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में जलने के बाद एक बड़े रूप में आके एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, और इसी की वजह से डीजल इंजन का नॉइज लेवल ज़्यादा होता है. So as the liquid fuel is still being injected in the cylinder after the first fuel is already burning, means कंटिन्यू में जब एक फर्स्ट लेयर ऑफ फ्यूल जो है इंजेक्टेड फ्यूल वो हॉट एयर के कांटेक्ट में आ गई, वो बर्निंग होना शुरू हो गया, लेकिन उसके पीछे जो फ्यूल पार्टिकल्स आ रहे हैं वो स्लाइटली रिच रहेंगे और वो भी धीरे धीरे जलना शुरू करेंगे. वो जो पहले जो फ्यूल जला है उसके टेम्परेचर से वो भी इग्नाइट होने की कोशिश करेंगे. So after the initial start of combustion, when all the air fuel mixture that is in a combustible state is quickly consumed, बहुत तेजी से फ्लेम combustion chamber के अंदर फैलेगी, ये स्प्रेड होगी, and the rest of the combustion process is controlled by the rate at which fuel can be injected, atomized, vaporized and mixed into the proper air fuel ratio. This rate of combustion now controlled by injection rate. The rate of the combustion controlled by injection rate means very quick opening and closing of the injector. So if you can understand that we can give the sudden acceleration or power to the diesel engine, so one thing is very clear that the flow of air in diesel engine is not controlled by the throttle valve, and the supply of the fuel, which is controlled by the fuel injection pump in the diesel engine, is responsible to deliver the correct quantity of fuel at the correct time. So as the airflow increase, speed increase, the opening and closing of the injector is very fast, so that maximum quantity of fuel can be injected to fulfill the requirement of the power or produce the power. The diagram shows the spray pattern of the injector, and you can see
the different layer of identified, the spray pattern identified in terminology with the A, B, C, D, E. So as closest or nearest point of the injector, the A point is find out, and which is known as a rich zone. Means here not sufficient vapors of the diesel fuel is available. In second, which is called the rich combustible point, that is denoted by B, here partially vapor, partially liquid fuel drop is available. And C, which is most suitable for starting the combustion, is called the stoichiometric air fuel ratio. Means here the 1 gram of diesel available with minimum 22 gram of the air. So it is called the chemically correct air fuel mixture or stoichiometric air fuel mixture. So continue with the D. It is the lean combustible, where the maximum air particle is available and very few or fine particles of diesel fuel is available and very difficult to start ignition until unless optimum temperature is not achievable in the combustion chamber. Similarly, E point is also indicate about the too lean of the air fuel ratio, and in overall this system the self ignition starts mainly with the B zone, and solid carbon soot is generated mostly in the zone A and B. The solid carbon soot is generated because of lack of oxygen. See, once a combustion is start, the oxygen immediate consumed in the spontaneous combustion or different location combustion. So when the temperature and pressure with the flame propagation rate spread in the combustion chamber, few diesel particles not completely reacted and they produce the soot. Soot is a thick carbon crystal. So in the second figure you can see that with the crank angle and cylinder pressure rise, the pressure as a function of crank angle for a CI engine, and point A is where fuel inject is start. A to B is ignition delay and point C is the end of fuel injection. If the C10 number of the fuel is too low, C10 number is define the quality of the fuel, means how much they fast they ignite or react. So if the C10 number of the fuel is too low, a greater amount of fuel will be injected during ignition delay time. Ignition delay time means it is just very initiation of the ignition point, जहाँ पे जितनी जल्दी फ्लेम डेवलप हो जाए, स्टेबल हो जाए, ताकि उतना फास्ट वो बी पॉइंट पे पहुंच सके. So when the combustion starts, the additional fuel will cause the pressure at point B to increase too fast, resulting in a rough engine cycle. If it is not a homogeneous charge mixture and it is purely spontaneous means अलग अलग लोकेशन पे अपने सिलेंडर एरिया में जल रहा है और उसके बाद हो सकता है वो पूरा एक कंप्लीट एक्यूमुलेट ना हो, एक कंप्लीट सेंटर पार्ट पे एक्सप्लोजन ना हो, तो अनइवन जो प्रेशर राइज और डेवलपमेंट होगा वो एक आपको रफ इंजन आइडलिंग स्पीड प्रोवाइड करेगा. So next important point in the combustion is the fuel injection. The nozzle diameter of a typical fuel injector is 0.2 to 1 mm. बहुत ज़्यादा बारीक होल रहता है आपका हेयर के डायमीटर जितना, एंड इंजेक्टर में है वन नोजल और सेपरेट. ईच इंजेक्टर मिनिमम हैव वन नोजल और मैक्सिमम 6, and these small nozzles of the injector is called the pintles. The exit velocity of liquid fuel from the nozzle is usually about 100 to 200 meters second. Just
The velocity of इंजेक्टेड फ्यूल ये हमें मिल पाती है क्योंकि हम 18 बार के प्रेशर से फ्यूल इंजेक्शन पंप के माध्यम से हम डीजल को इसमें अलाउ करते हैं. So this is quickly reduced by viscous drag, evaporation and combustion chamber swell. जितना तेज वहां से निकलेगा उतना हम उम्मीद करते हैं कि विस्कोसिटी फ्यूल की ब्रेक होगी, ज्यादा वो स्मूथली इंजेक्ट करेगा और उतने फास्ट स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होगा और उतना तेज एवोपरेट होगा, और जितना तेज एवोपरेट होगा उतना फास्ट वो जो कंप्रेस्ड हॉट एयर है उसके ईच पार्टिकल को रिएक्ट करेगा और जो छोटे मोटे जो एरियाज में बर्निंग स्टार्ट होगी, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द हॉट एयर, जो सिलेंडर का सराउंडिंग टेम्परेचर है उसके कारण भी बर्निंग स्टार्ट होगा और वहाँ पे धीरे धीरे जो वैक्यूम जोन बनेगा उसकी वजह से जो एयर और फ्यूल का जो डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण वहाँ पे स्रिल डेवलप होगा और वो हमें एक एडवांटेज देगा कि एयर और फ्यूल परफेक्टली होमोजीनियस मिलते जाएं ताकि फ्लेम प्रोपेगेशन बहुत तेजी से कंबशन चैम्बर पे हो, के अंदर हो. सो एवोपरेशन अकर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द फ्यूल जेट, मतलब जेट के जो बाहर का आपने डायग्राम देखा था, जो आउटर पेराफेरी होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन बिटवीन बी टू ई जो हमने जोन डिक्लेयर किया था उसके बीच में होना चाहिए. एंड वेल द सेंटर रिमेन्स लिक्विड, बीच वाला जो ए वाला पार्ट है बहुत ज़्यादा थिक विस्कस लिक्विड रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू फिगर, the inner liquid core is surrounded by successive vapor zones of air fuel that are, the first is called too rich to burn, B is rich but combustible, मतलब आप उसको जला सकते हैं बट अभी भी वो रिच है. C stoichiometric, और we can say that the chemical correct air fuel mixture, जहाँ पे बहुत स्मूथली और जल्दी फ्लेम स्टेबल भी होगा, इग्निशन लैग पीरियड कम रहेगा और प्रेशर राइज तेजी से होगा. लेकिन जैसे जैसे वो सी या तो बी की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, डी की तरफ जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत आएगा क्योंकि पहले से वहाँ पे लीन कंबस्टेबल है और हो सकता है वो बिना आग लगे वो वेपर्स फॉर्म में टेम्परेचर में बर्न हो जाए लैक ऑफ ऑक्सीजन मोल्स की वजह से, और जिसके कारण सूट प्रोड्यूस हो. सिमिलरली ई जोन जो कहलाएगा आपका वो टू लीन और लीन जोन कहलाएगा जहाँ पे बर्निंग या वहाँ पे फ्लेम का पहुँचना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो ऑलमोस्ट वेस्ट होता है ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस. द डायग्राम शोज द करेक्ट वे ऑफ द स्प्रे पैटर्न और उसके जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं आप देख सकते हैं डायग्राम में. नोजल होल, फिर उसके बाद स्प्रे टेल, मतलब स्प्रे टेल रिच एरिया रहेगा जहाँ पे काफ़ी पावरफुल इंजेक्शन का जो लास्ट पार्ट रहता है वो आता है. फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें तो दैट इज कॉल्ड द ट्रेलिंग एज, जहाँ पे हमें एक हद तक केमिकल करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर मिलेगा. उसके बाद जो लास्ट एंड आता है दैट इज कॉल्ड द कोर. कोर में आपको जो ई जोन और आपका डी जोन जो रहेगा वो वहाँ पे काफ़ी लीन मिक्सचर मिलेगा. एयर स्वेल का पैटर्न आपको दिख रहा है उसमें, यदि एक जगह भी थोड़ा सा फ्लेम डेवलप होगा और जिसके कारण नेगेटिव जोन क्रिएट होगा, एयर स्वेल उस डायरेक्शन में मूवमेंट करने की कोशिश करेगा. और जो बिल्कुल नेरो पार्ट जो आपको दिख रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया में, वो इक्विवेलेंस रेशो शो करेगा कि मिक्सचर ना ज़्यादा रिच है ना ज़्यादा लीन है. इट इज कॉल्ड द मॉडरेट मिक्सचर. In second diagram, it shows the mechanism of combustion of a fuel spray injected in a swirling air. मतलब ये आपको ये दिखाना चाह रहा है कि जो डेवलपमेंट ऑफ द फ्लेम होता है और उसके बाद जो प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम होता है वो कैसे न्यूक्लियस बनता है और जिसको हम इग्निशन न्यूक्ली कहते हैं, और कैसे वो धीरे धीरे एक बीच वाली एजेस से ऊपर वाली एज, मतलब जहाँ पे रिच फ्यूल अवेलेबल है वहाँ की तरफ डेवलप होगा, और कुछ न्यूक्लियस जो फ्लेम को लेके आउटर एज की तरफ जाएगा जिधर पे लीन मिक्सचर अवेलेबल होगा. सो द डायमीटर ऑफ
liquid drop injected from the injector is around 0.001 mm. The factors that affect the droplet size, जब इंजेक्टर से हाई प्रेशर इंजेक्ट होता है कितने ज़्यादा ड्रॉपलेट साइज का होना चाहिए, वो जो डिपेंड करेगा वो प्रेशर जो अक्रॉस द नोजल होता है और नोजल का जो साइज होगा और ज्योमेट्री होगा उस पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा फ्यूल प्रॉपर्टीज, बहुत ज़्यादा क्लीन फ्यूल है ये नहीं है उस पे डिपेंड करेगा। एयर टेम्परेचर कितना है, ताकि एयर टेम्परेचर पहले से ज़्यादा हो और ड्यूरिंग द कंप्रेशन वो और बढ़ जाए तो वहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगा और उसी की वजह से जैसे ही फ्लेम स्टेबल होने के बाद जो रिएक्शन चालू होगा टर्बुलेंस भी चालू हो जाएगा और जो हाई प्रेशर डिफरेंस होगा नोजल के अक्रॉस, मतलब पंप के प्रेशर और आउट ऑफ द नोजल, उसकी वजह से हमें एक फ़ायदा मिलेगा कि मैक्सिमम स्मॉलर ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे, हमारा फ्यूल वेस्ट नहीं होगा। सेकेंडली उसकी वजह से हमें जो सूट का जो फॉर्मेशन है वो कम होता चला जाएगा। Another point is injector of small engines with high thrill are designed to spray the fuel jet with very high speed. This speeds the evaporation process if engine cylinder wall sufficiently heated. मतलब जितना फाइन स्प्रे जाएगा उतना एवोपरेशन फास्ट होगा और उससे हमें सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि जैसा आप जानते हैं कि डीजल फ्यूल बहुत विस्कस फ्यूल होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो वॉल्यूमेट्रिकली एक्सपैंड होता है, तो उसके कारण हॉट एयर के कांटेक्ट में आना बहुत आसान हो जाता है और जो बर्निंग ऑफ द फ्यूल है वो बहुत रैपिड होता है, फास्ट होता है। So this is the because of the limited real-time cycle in a small engine that operates at a high speed, and because of this entire process we can say that the diesel engine produce more power compared with the petrol engine.